तो टॉपिक इज ऑक्सीडेशन स्टेट, राइट। ऑक्सीडेशन स्टेट पहले होती क्या है? व्हाट इज ऑक्सीडेशन स्टेट? यस, ऑक्सीडेशन स्टेट अपने आप में क्या है? इट इज द फॉर्मल चार्ज on an atom. It is formal charge on an atom. When all the other atoms attached to it are removed, ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं फॉर्मल चार्ज। उस पे क्या चार्ज रहेगा अगर सारे एटम जो उससे अटैच है उनको निकाल दें, ठीक है, तो दैट इज ऑक्सीडेशन स्टेट। तो पहला क्वेश्चन डीएनएफ ब्लॉक में बनता है कि व्हाई ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैव वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स। अगर ये क्वेश्चन आए तो हम क्या लिखेंगे? तो हमारा आंसर क्या होगा कि जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं दे हैव n-1 and ns orbitals having almost same energy. They have n-1 and n-1d and ns orbitals have almost same energy, or we can say there is a little bit difference in their energies. So electrons from both the orbitals can participate in bonding. That's why they have variable oxidation state. तो ये आपका आंसर रहेगा कि वेरिएबिलिटी क्यों ज्यादा है, क्योंकि n-1d इलेक्ट्रॉन ns इलेक्ट्रॉन्स बोथ पार्टिसिपेट इन बॉन्डिंग, ठीक है। तो अगर सिर्फ ns इलेक्ट्रॉन रिमूव हो, कीपिंग दिस n-1d ऑर्बिटल्स inert or we say unaffected, then it means they have +2 oxidation state, and then the electrons start removing one by one, so they can show higher oxidation state of +3, +4, +5, +6 depending upon the number of electrons available and nature of the metal, okay, but difference is by 1. So when we compare them with S block elements, तो S block elements में क्या होता है? Sorry, S नहीं, sorry, P block elements. If we compare with P block elements, question ऐसे आए कि what is the difference in oxidation states of P block and D block elements? तो इसका पहला आंसर क्या आएगा कि जो P ब्लॉक एलिमेंट्स हैं उसमें जो ऑक्सीडेशन स्टेट्स हैं डिफर बाय 2, दे डिफर बाय 2। जैसे लेड, तो Pb can show +4 oxidation state, can show +2,
And why there is a difference of 2? Due to inert pair effect. What is this inert pair effect? It is the inability of s electrons to take part in chemical combination as we go down the group. It is the reluctance of s electron pair to take part in chemical combination as we go down the group. जैसे जैसे हम डाउन द ग्रुप जाते हैं तो हैवियर एलिमेंट्स में लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट्स आर मोर स्टेबल. जैसे लेड की बात करें +4+2, उसमें +2 इज मोर स्टेबल देन +4. बट वही कार्बन की बात करें, कार्बन इसी में फैमिली में है तो +4 इज मोर स्टेबल देन +2. गॉट इट? तो एज वी गो डाउन द ग्रुप +2 becomes more stable and +4 becomes less stable. मतलब lower oxidation states are more stable for heavier elements in this case. But अगर हम D ब्लॉक की बात करें इसका क्या हो गया? एक तो दे डिफर बाय 2, पहला पॉइंट. दूसरा ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट जो डाउन द ग्रुप है वहां लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा स्टेबल होती जाती है. ठीक है. Reluctance of s electron pair to take part in chemical combination statement समझ में नहीं है. ये NS2 है. इसमें बोलता है कि ये NS इलेक्ट्रॉन जो है जैसे जैसे हम डाउन द ग्रुप जाते हैं S इलेक्ट्रॉन पेयर जो है वो ज्यादा अट्रैक्टेड हो जाता है टुवर्ड द न्यूक्लियस, टुवर्ड द कोर. दे बिकम इंक्रीजिंगली कोर इलेक्ट्रॉन्स. दे आर नॉट participating in bonding, rather they remain inert. That is called inert pair effect. और ये p ब्लॉक एलिमेंट्स में ज्यादा होता है. ठीक है, यानी अट्रैक्शन ज्यादा होता है तो वो इलेक्ट्रॉन लूज नहीं हो पाते जल्दी. हाँ, s इलेक्ट्रॉन ओनली, क्योंकि s इज मोर अट्रैक्टेड टुवर्ड द न्यूक्लियस, पास होता है. हाँ, तो इसलिए लास्ट वाली लाइन कॉम्बिनेशन से ही बात. हाँ, तो इसलिए s इलेक्ट्रॉन पेयर ऐसा हो जाता है. बट अगर बात करें ट्रांजिशन एलिमेंट्स की, मतलब डी ब्लॉक एलिमेंट्स की, तो पहले तो ऑक्सीडेशन स्टेट्स जो होती हैं दे डिफर बाय 1. ऑक्सीडेशन स्टेट्स डिफर बाय 1, +2 +3 +4 ऐसे. ठीक है. और दूसरा जो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट्स है, higher oxidation states are more stable for heavier elements. इसमें उल्टा हो गया. तो डाउन द ग्रुप हायर ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा स्टेबल होती है. ठीक है. तो ये डिफरेंस आएंगे दोनों में. हेवी एलिमेंट्स की जगह डाउन द ग्रुप लिख देना. हाँ, डाउन द ग्रुप हायर ऑक्सीडेशन स्टेट बिकम मोर स्टेबल. ठीक है. Copper is more stable in +2 state in aqueous solution than +1. In most of the compounds, copper is in +2 state. ठीक है, like CuF2, even CuCl2. But when we come to CuI2, तो CuI2 जो है that disproportionate. CuI2 जो है वो disproportionate होता है and we get Cu disproportionate. CuI2 means decompose to give
Cu2I2 and I2, तो ये याद रखना। बाकी CuF2 does not do this reaction, ठीक है, it remains in CuF2, CuCl2 even, but Cu2 that turns into Cu2I2 and I2। ओके, तो ये हो गया इन कंपाउंड्स, जो Cu2 है दैट गिव्स दिस, है ना। और फोर्थ पॉइंट लिखो कि कॉपर जो है 1+, इट डिस्प्रोपोर्शनेट इन एक्वस सॉल्यूशन, कॉपर 1+ डिस्प्रोपोर्शनेट in aqueous solution. and it gives अगर एक क्वेश्चन आता है क्यों कि वाई कॉपर 1+ डिस्प्रोपोर्शनेट, तो आप लिखोगे बिकॉज जो हाइड्रेशन एंथैल्पी है ऑफ कॉपर 2+ Lower than is more than copper 1+, ठीक है। which compensate the second ionization enthalpy, that which compensate the high second ion enthalpy of copper। क्योंकि कॉपर 1+ से कॉपर 2+ बनाना है अगर गैसियस स्टेट, इट इज डिफिकल्ट टू फॉर्म डेल्टा X देना पड़ेगा, because it is 3d10 and it becomes 3d9, so second ion enthalpy is high, but that is compensated by the hydration enthalpy because it is in aqueous solution, that's why copper 1+ disproportionate in aqueous solution। कितने पॉइंट हो गए? 4। Now the most common oxidation state in the first row of transition elements is +2, because you know s electron when removed it become +2, and exception is scandium, because scandium, in case of scandium, after losing 3 electrons it require noble gas configuration, इसलिए scandium तो +3 में ही एग्जिस्ट करता है, बट बाकी कैन शो +2, ठीक है, इन मोस्ट स्टेट्स +2 सब में होगा, फिर +3 +4। अच्छा, ऑक्सीडेशन स्टेट most common oxidation state increases along the period up to the middle of the series। For example, from +2 to +7 up to manganese, then there is drastic decrease in oxidation states। जैसे आयरन मोस्ट ऑफ द केसेस में +2 और +3 शो करता है, although it has higher oxidation states as well, but most of the cases में वो +2 और +3 में रहता है। फिर हमने क्या कि जो
हायर ऑक्सीजन स्टेट्स है, अभी किया ना, हायर ऑक्सीजन स्टेट्स आर मोर स्टेबल और हैवियर एलिमेंट्स, जस्ट डिफरेंस में किया हमने। फॉर एग्जाम्पल क्रोमियम की सीरीज में कौन आता है, क्रोमियम, मोलिब्डेनम, टंगस्टन। उधर क्रोमियम जो है इन +6 स्टेट is a strong oxidizing agent, like Cr2O7 2 negative, it is an oxidizing agent, dichromate ion. But at the same time molybdenum or tungsten, they are again in +6 state, but they are acting as oxidizing agents. They are not acting as an oxidizing agent. Lowest oxidation states of transition elements are with are in complex ions. With ligands like CO, ठीक है, which forms sigma as well as pi. For example, NiCO4, FeCO5, CrCO6. In all these compounds it has zero oxidation state. Even in Mn2CO10, CO2CO8, in all of them, metal, nickel, iron, chromium, manganese, cobalt, they have zero oxidation state. Nine. Okay. 9. The maximum oxidation state of elements is with oxygen and fluorine. Being small in size, high electronegativity, and they are strong oxidizing agent as well. Therefore, maximum oxygen state of transition elements are with oxygen and fluorine. इनमें से भी oxygen is superior than fluorine. Generally, fluorine should be more active than oxygen. हायर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, साइज भी इससे स्मॉल है और ऊपर से स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी है एलिमेंट्स में फ्लोरीन. बट व्हाई ऑक्सीजन इज सुपीरियर देन फ्लोरीन इन स्टेबलाइजिंग हायर ऑक्सीडेशन स्टेट्स? Can you guess? Okay, why it is superior? Because oxygen has ability to form multiple bonds.
Because oxygen has ability to form multiple bonds, to form double bond with transition elements. इसलिए ऑक्सीजन इज सुपीरियर देन दैट ऑफ फ्लोरीन. ठीक है, इसलिए अगर मैक्सिमम ऑक्सीजन स्टेट की बात करेंगे, अगर मान लिया किसी भी ऑस्मियम की बात कर लेते हैं, ठीक है, तो ऑस्मियम कैन शो +8 विद ऑक्सीजन ओनली because it is difficult to arrange 8 fluorines around osmium. Rather, it is stabilized by 4 oxygen only because of its ability to form multiple bond. But fluorine cannot form multiple bond. Fluorine can form single bond. Therefore, to stabilize, to have +8 oxidation state, we should attach 8 fluorines, which are difficult to arrange. Okay, because of the repulsion बढ़ जाएगा. because of steric hindrance we can say. ठीक है, इसलिए better to stabilize it with comfortable zone 4 oxygens. सर ये स्टेटमेंट लिखवा देना. कौन सी? ये लिख तो दी. वो नहीं, वो steric hindrance वाले. To stabilize higher oxidation states with fluorine, we should attach equal number of fluorine atoms that can cause steric hindrance. And destabilize the molecule. Destabilize arrangement. ठीक है, next, in low oxidation states, metal can form ionic bonds. They can form ionic bonds, but ये तो सिंपल है, फिर जान जरूर लगाओगे कि जितना हायर चार्ज होता है उतना कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ जाता है. तो इन हायर ऑक्सीडेशन स्टेट्स they can form covalent bonds. For example, MnO4 negative, Cr2O7 2 negative. In all these compounds, metal and element oxygen, they have covalent bonds. Like this. Right? So in this way, they form covalent bonds.
So it is all about oxidation states. Now come to the next part, that is color. So most of the transition elements and their compounds are colored. If question is like that, why transition elements and their compounds are colored. The question is why transition elements and their compounds are colored. So you will write it is due to DD transition. So to have this DD transition element or its in its oxidation state, it should have D1 to D9 electronic configuration. Then only DD transition takes place. Means from one d orbital to another. In crystal field theory, we have done कि ऑक्टाहेड्रल अरेंजमेंट में T2G और EG होते हैं, ठीक है, DXY, DYZ एंड DZX और DX स्क्वायर माइनस Y स्क्वायर एंड DZ स्क्वायर, ठीक है. तो इन दिस वे एक तो DD ट्रांजिशन हो रहा है, कहां पे होगा D1 to D9, but sometimes it is observed that even D0 configuration is there and it is colored. अच्छा, इसमें एक और बात ध्यान रखना कि अगर ऐसा आता है क्वेश्चन तो आपको आंसर तो ये लिखना है, ठीक है, कि कलर्ड है ना, ड्यू टू DD ट्रांजिशन. बट चेक कि उस कंपाउंड में जो ऑक्सीडेशन स्टेट है उसमें वो D इलेक्ट्रॉन है उसमें कि नहीं, ठीक है. और ये कलर कैसे होते हैं, दे आर लाइट ग्रीन, लाइट पिंक, सच कलर्स आते हैं, है ना. बट कई बार D0 कॉन्फ़िगरेशन होती है एंड मॉलिक्यूल